Hello everyone. Now we are going to discuss periodic trends in properties. Till now we have done that in modern periodic table the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, and it was observed that with this arrangement the properties of the elements, they were also varying regularly within the period as well as down the group. So now we are going to discuss the properties which vary within the period as well as down the group, along with the reasons that why there is a variation in the properties within the period as well as down the group. The properties are ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegatividity, atomic radii and valency. We will discuss each of these properties in detail, that how the variation occur, starting with the atomic radius first. As the name is indicating, atomic radii means size of the atom. In simple words we can say that we have to find the size of the atom. So for this, if we consider the atom as a sphere, means in a form of a circle, then how can we find the size of a circle? By finding the distance from the center up till the last shell. अगर हमें एटम का साइज फाइंड करना है तो हम उसके सेंटर से लेकर अगर लास्ट शेल तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें तो हमें एटम का रेडियस मिल जाएगा. फ्रॉम दैट रेडियस वी कैन फाइंड द साइज ऑफ द एटम. बट प्रैक्टिकली इफ वी सी, it is not possible to isolate an atom. The reason being, we know that atom is very small, which is beyond our imagination. अगर इतना छोटा पार्टिकल है जिसे हम आइसोलेट ही नहीं कर सकते, then how is it possible to find the radius of an atom and how to find the size of an atom? Moreover, in order to become stabilized, atoms combine with each other in different possible ways, and due to those bondages the atmosphere changes and the size of the atom also changes. So it is difficult to find the size of an atom practically. लेकिन इन सब के बावजूद भी ये तरीका निकाला गया कि हम कैसे एटम का साइज फाइंड करें. उसके लिए क्या तरीका था कि ये कहा गया कि एटम अलग अलग तरह से बॉन्ड बनाता है, तो हम उन बॉन्ड्स के बेसिस पर ही एटम का साइज फाइंड करें. सो डिपेंडिंग अपॉन different types of bondages, there are different types of radii. First is covalent radii, second is metallic, third van der Waals, and fourth is ionic radii. Covalent radii is calculated for those atoms in which the atoms are covalently bonded to each other. Means covalent bond means the bond which is formed by sharing of electrons. Starting with the discussion of the covalent radius, first of all, if we take the example of hydrogen molecule, we know that atoms combine with each other in order to become stabilized. अब उन्हें कैसे पता कि वो stabilize है? They acquire the nearest noble gas configuration. The nearest noble gas to hydrogen is helium. तो ये हाइड्रोजन एटम भी हीलियम जैसी configuration acquire करने की कोशिश करेगा और ये भी. So for that, both of them they will not donate their electron. ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं एक दूसरे को. Instead of it, they will share the electrons in order to become stabilized to acquire the nearest noble gas configuration. अब ऐसा करने के लिए ये दोनों क्या करेंगे? दोनों atoms they will share their electrons. So in such a case, if we find the internuclear distance and do the mean of that distance, हम इन दोनों के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस फाइंड करके उसका मीन कैलकुलेट कर लें. किस केस में? जब एटम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है तो हमें एक एटम का रेडियस पता चल जाएगा. फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द साइज ऑफ द एटम. अब ये किस कंडीशन में हुआ? जब दोनों एटम्स एक ही तरह के थे. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड उन्हीं एटम्स में बनता है जो एक जैसे हों. अगर अलग अलग एटम्स मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन HCl, Cl इज इन नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे नहीं देगा
इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हीलियम जैसी कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करेगा. सो इन दैट केस बोथ ऑफ देम दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. But now the atoms they are different. In such a case we can find the size of the atom by measuring the distance from the center of the nucleus of one atom up till the distance where the electrons they are shared. This is one of the ways कि एक एटम के न्यूक्लियस से वहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो जहां इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. बट अगेन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर दैट डिस्टेंस. For this, what is done is हमें यहाँ से एक एटम का साइज पता चल गया. अब इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसमें से अगर हम एक एटम का साइज माइनस कर दें तो हमें दूसरे एटम का साइज पता चल जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द साइज ऑफ एन एटम इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसी के बेसिस पर अब कोवेलेंट रेडियस दो तरह का हो गया इन टू केसेस. इन वन व्हेन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज देयर. Homonuclear means when both the atoms they are same, and the other for heteronuclear molecule. Means the molecule in which both the atoms they are different. So in this way we can find the covalent radii in homonuclear molecule and heteronuclear molecule. Coming to the metallic radius. Metallic radius is calculated in the atoms which are bonded to each other in a metallic lattice, in a metallic crystal. अब suppose if we take the example of a copper wire, अगर हम ऐसे copper wire को consider करें तो उसके अंदर atoms कैसे arrange होंगे? Tightly packed to each other and lying adjacent to each other. In such a case, if we find the internuclear distance between the two atoms and taking the mean of it, we can find the size of the radius of one of the atoms and from there the size of the atom. So in this way we can find the size of the atom in case of a metallic crystal, and that is known as metallic radii. In the next we are going to discuss the next two radii along with the definitions of them and the variation of atomic radii within the period and down the group. Thank you.